रुकेंगे नहीं रुकेंगे, सबको स्वस्थ करेंगे, पूरा स्वस्थ करेंगे, नहीं थमेंगे नहीं थमेंगे, अब ठान लिया है मंजिल पाके रहेंगे, मंजिल पाके रहेंगे, मंजिल पाके रहेंगे। नमस्कार, which is Dr. Renu Rana Sehgal. আমার নাম শিল্পী। मेरा नाम नीरू रावत। আমি শিলিগুড়ি থেকে বিলং করি। आई एम डॉक्टर गंगा। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल बटीक छू। But मैं पुंसा वरियो प्रैक्टिस एज अ गायनोकोलॉजिस्ट काम करा। मैं एज ए ओपीडी नर्स काम कर रही हूँ। मेरा नाम दीपा गुप्ता है। आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। मैं गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाती हूँ। সোশ্যাল সার্ভিস করতে ভালো লাগে, তাই আমি এই প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। I help them in maintaining their oral hygiene by letting them know how they can brush their teeth, how they can take care of their teeth. जिंदगी बचावनुक आख सुकून नव जिंदगी दुनिया समझ अनमुक आख जुनून यह छु मैं याद प्रोफेशनल्स में खींचा। तो आपने देखा और सुना क्या कह रहे हैं भारत के स्वास्थ्य नायक, वो लोग जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत के समय हमारे काम आते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं। कल्पना कीजिए अगर वे यहां पर ना होते तो वो सही मानों में हमारी लाइफलाइन है। हम उनकी सेवाओं के लिए उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, जिनकी वजह से सभी भारतीयों के लिए एक अच्छा स्वस्थ और भरा पूरा जीवन जीने की ये यात्रा एक मंजिल तक पहुंच रही है। नमस्कार, NDTV-Dettol बनेगा स्वस्थ इंडिया के इस 9वें सीजन में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी भारतीयों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ये मुहिम पिछले 8 वर्षों से चल रही है। इस साल हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव। हमारे साथ जुड़िए। इस बार हमारी मुहिम है लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का, लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का। और भारतीय के लिए एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का हमने लक्ष्य लिया है। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? अगर हम एक साथ आए तो बिल्कुल हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। डेटॉल NDTV और मेरे साथ इस सीजन 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एक स्वास्थ्य लहर कल 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 निर्मल निर्मल हो अपना कल। एक स्वास्थ्य लहर कल 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 निर्मल निर्मल हो अपना कल। कल 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 हो अपना कल, कल 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 हो अपना कल। नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, सबको स्वस्थ करेंगे, पूरा स्वस्थ करेंगे, नहीं थमेंगे नहीं थमेंगे, अब ठान लिया है मंजिल पाके रहेंगे। कार्यक्रम और आगे ले जाने से पहले आइए आपको बता दें एक संदेश देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से, that NDTV has launched another edition of its annual event Banega Swasth India. I heartily compliment NDTV for this sublime annual initiative that has been striving to improve public awareness on crucial issues related to health. India, with the world's largest youth population, is poised to become the 3rd largest economy in the world in the coming decade. A healthy and skilled workforce is prerequisite for such transformative growth. Therefore, initiatives like Banega Swasth India are crucial in creating awareness and setting the policy discourse among all stakeholders in the field. The government, on its part, has taken several laudable initiatives towards universal Swasth Adhikar, or the right to health, for all citizens, including its flagship scheme Ayushman Bharat, which has brought health assurance to millions of poor families, while advancing people's access to quality tertiary care. Simple grassroots level interventions such as Swachh Bharat Mission
also go a long way in reducing our disease burden and increasing productivity. The agile and multi-pronged approach adopted by India to combat COVID-19 has been appreciated world over. With more than 278 crore doses already administered, the country has successfully implemented the world's largest free COVID vaccination program in record time. Concerted government interventions over the last few years have made healthcare a national priority and led to a sustained improvement in various health indices such as child mortality rates, immunization coverage, institutional deliveries, among others. Going forward, we must also focus our attention on containing the increasing incidence of non-communicable diseases by creating greater awareness among people on these and other emerging lifestyle diseases. My best wishes to the management, staff and viewers of NDTV for this initiative. I wish the program all success. Let us persevere together, beg your pardon, for ideals of Swasth Lakshya, Swasth Adhikar. I would like to start by asking you, Chris, what does Reckitt see as the most important contribution from an individual and from society, towards a healthy life? Well, simply put, I think we all have a role to play. At Reckitt, we have put purpose at the heart of what we do. Our purpose, the reason why we exist, is to protect, heal, and nurture in the relentless pursuit of a cleaner and healthier world. But we don't want to stop with a purpose. We are action-oriented. We want to see progress. So we have also declared that we are in a fight to provide access to high-quality health and nutrition, product and information for everyone, so that health and hygiene becomes a right, not a privilege, and that all of society can participate. So really, in a nutshell, I would say we all have a role to play. We've impacted 50 million lives, but we want to triple that ambition for next year. Gaurav, what keeps Reckitt so committed to this project? Many reasons, Ankit. But first of all, very excited to be on the 9th season. I don't know who could have thought we'll be here, and the progress that we've had over these 8 years, amazing. The amount of good work you see today, state governments, central governments, everybody is wanting to do is so amazing. I mean, Ravi goes to any government office and we say, this is our program, and you say, okay, how do you do it more? That's the attitude that we see. Correct. So I think there are many, many reasons, and so that we are here for the long haul, and hopefully we can continue this for many more years. बच्चन साहब, एक और बात बताते चलें, जैसे कि आपने इसका जिक्र भी किया था, the theme this time around, and we've seen how the themes have changed. Every season has a very specific target, a specific mission. How do you achieve that goal? Sampoorn Swasthya. I just feel that every time you build a tagline, you're compelled almost to follow it to its completion. And it's very important to have formed that tagline and then make it, possible and plausible. I just feel that every year, thanks to NDTV and all of us that cooperate in this mission, it is important to keep drilling this thought into every mind in the country. Many a times, a lot of people look at us and say, दो तीन चार बात करके आप लोग चले गए, उसके बाद कुछ हुआ नहीं. But when you see results happening in front of you, that's when you realize that this mission is succeeding, and may it continue to succeed. But as I said, we have to keep pushing, we have to keep endeavoring to make sure that that tagline is lived up to. And speaking of good health and suppose even if you're recovering, the process of healing, music has a very important role to play, and that's where we have Shantanu Da with us. Would you like to tell us about this connection? Music, I think, is an incredible healer. And actually, if you look at the statistics during these 2 years of COVID, there's been a phenomenal rise of consumption of music all across. So I think, yes, if you're talking about Swasth India, I think music plays a very important role when it comes to mental health care. Yeah. And speaking of the anthem, let's speak to the person who penned that anthem. Prasoon Joshi is now with us. Prasoon, tell us what inspires you, what according to you is holistic health? बनेगा स्वच्छ इंडिया
जब मैंने लिखा था तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात हम हर साल इस पर इस मुहिम का हिस्सा बने। तो इस साल भी कारण यही था कि उसको आगे ले जाना है। और जब रैकेट में गौरव हैं उनके साथ और एनडीटीवी में तारक जी के साथ मैं जुड़ा, उनके साथ टीम के साथ पूरी काम करना शुरू किया, तो लगा कि इस वर्ष का जो थीम होना चाहिए वो लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एक अपने सामने एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का, हम उसे लेकर आगे बढ़े। और एक शब्द कल 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 है जो एक नदी के बहने का स्वर है, मुझे लगा कि उसे हम अगर लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारी कई भाषाओं में भी है और वो कल का अर्थ आने वाला कल भी है, तो इसलिए मुझे लगा कि उस पर काम करें। और इस एसोसिएशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। The fact, Dr. Roy, that Prasoon Joshi has been at it right from the beginning, you know, putting those thoughts in words has been a remarkable journey in itself. I just remember talking to him about 3-4 months ago, and straight away, just in that first conversation, Kal Kal came up, and then he made it into such a beautiful anthem. But I think what everybody is raised are such important points, and we should point out that during the course of this year we will be going to chief ministers of every state and trying to get commitments from them publicly on air. For example, we want every state to double their expenditure on child health in 5 years. That means we're going to get a commitment from every state to spend 15% extra on child health every year. So after 5 years, we'll have doubled our expenditure on child health. And the second thing, which we did a very moving program with ASHA workers, really inspired a lot of people. We want to increase ASHA workers from 1 million to 5 million. So every state has to contribute by increasing the number of ASHA workers by 50% every year. और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ मैं। अभी ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आपसे हमारी मुलाकात हुई और बहुत सारी यही स्वास्थ्य को लेकर के बातें हुई थी, और आपने बताया किस तरह आपने अपने वजन को बहुत भारी तादाद में कम किया। आपने हमसे कहा था कि ये जो आप व्यायाम कर रहे हैं उसके बारे में सूची जो है वो बना करके हमको भेजेंगे, अभी तक आपने भेजा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी भेजिए ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। बिल्कुल, मैं जरूर भेजूंगा। और विशेष रूप से और एक अच्छी बात हुई जो पिछले बार मैंने आपको कार्यक्रम में बताई थी कि मेरे खेती में ऑर्गेनिक सब्जियां होने लगी। तो मैं जनरली अब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को अवॉइड करके घर में ऑर्गेनिक सब्जियां यूज करने के ऊपर और फूड ग्रेन भी ऑर्गेनिक का आग्रह रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी। तो अब चलते हैं सीधा अयोध्या और मीनाक्षी पायल के पास चलते हैं। We are creating, recycling the spaces. We have kids with us, which you can see. It's a 200 feet long wall which we are covering today with the kids. We have kids from our international school who are painting this beautiful wall. And हमारा लक्ष्य ये है कि आज 5 बजे तक हम इस वॉल को, जो कि 200 फीट लंबी है, उसको पूरा कर लें। और हमारा कहना ये है कि जब हम इस तरह की जो आर्ट है वो एक सॉफ्ट पावर है, और उसके थ्रू जो अवेयरनेस और एजुकेट हम लोग कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किसी भी प्रोजेक्ट की जो नींव है वो होता है हमारी जनरेशन, हमारी सोसाइटी, और इन बच्चों को आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो लगे हुए हैं हमारे साथ। Thank you so much, Payal. We're going to be coming back to you. And this hour, we are going to be talking about that how in the last 75 years, India has progressed on major healthcare indicators since 1947. We're just going to ask Dr. Mavlankar a question. What do you think has been India's biggest achievement according to you? At the time of independence, almost 150 to 200 children were dying in the first year of life after birth, as compared to now less than 30. Maternal mortality, delivery, it is not a disease. Delivery is not a disease. It is a normal physiological process. But the estimates of mothers dying in delivery was almost 1,000 to 2,000 mothers dying per
lack of deliveries, 100,000 deliveries. So 1% mothers were dying just in the process of delivery. We have reduced that to less than 100. So these are some of the big achievements and game changers. Of course, we can discuss more. Sonu, you've worked on the ground during the pandemic, and even with ASHA workers, you recently met them, you gave them cycles, because they really are the point of contact on ground, who are working in the interiors, and going access is a huge issue. Tell us about it when you meet them, when you worked with them. What do you think really the challenges are still? Traveling again was one major problem they faced, but I really want to thank them because the kind of network they had, and that also really helped me during the pandemic, because wherever we wanted to reach out to the needy families, whether to send them oxygen concentrators or medicines, ASHA workers were one point which helped us reach out to them. In fact, absolutely, we have Matilda ji with us. Matilda ji, आप 15 साल से आशा वर्कर का काम कर रहे हैं, आप फोर्ब्स के लिस्ट पर भी आए हैं, और खासकर जो आपका काम है, जो हम बात कर रहे थे मदर और चाइल्ड, उनके लिए काम करते, थोड़ी बता सकते हैं कि किस तरह का आप काम करते हैं और कितना ज़रूरी है ताकि हर बच्चे और माँ की सेहत सही रहे? हम पहले काम करते थे जिस इरादे से हमको सिलेक्शन किया गया, जिस स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़रूरी था एक माँ का और एक बच्चा का केयर करना, उसको सेफ डिलीवरी करवाना, वो होता है बच्चा और माँ का सबसे ज़्यादा केयर करना उस टाइम। तो हमको इसीलिए कि हॉस्पिटल डिलीवरी करवाना था, उसको मोटिवेट करना है। जैसे होम डिलीवरी करने से सबसे ज़्यादा माँ का और बच्चा का नुकसान होता है। कभी कभी बच्चा घर में मर जाता है, जैसे डिलीवरी हुआ, लेट से डिलीवरी हुआ या तो सडनली बच्चा का कोई कॉम्प्लिकेशन दिखा तो वो मर जाने का डर होता है। उस टाइम हड़बड़ी में हम हॉस्पिटल ले जाए, अगर हॉस्पिटल में जाने से आप कैसे सुरक्षा पा सकते हैं, यही चीज़ एक माँ और उसका फैमिली को समझाना था, वो चीज़ हम लोग किए। मैं रवि आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप रैकेट के बारे में बता सकें कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ आपका किस तरीके का एसोसिएशन रहा है? So Sanket, through Dettol Banega Swasth India program, initially, when we started, we were in around 5 districts in India, 8 seasons back. When now we see we are in all 100 plus aspirational districts in India, we have not left a single district. और हर स्टेट अलग अलग वेरी करता है। वेस्ट बंगाल अलग है हेल्थ वर्कर्स का ट्रेनिंग में, उत्तर प्रदेश अलग है, उड़ीसा अलग है, लेह अलग है और उत्तरांचल अलग है। इम्पॉर्टेंट है कि कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स बने, जैसे ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं एक्रीडेशन के, उसी तरह से एक्रीडेशन हो ट्रेनिंग्स का भी, और ऐसा नहीं हो कि रैंडमली कोई भी आके ट्रेन करके जा रहा है। तो वो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संकेत, एंड वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन दैट फ्रॉम लास्ट 8 seasons at least, I can say. A lot of the ASHA workers themselves are malnutrition. How do you deal with that? It is a paradox. One way they are going to promote the best nutrition and health messages, at the same time large number of them are also malnourished. So I think the government and the civil society should invest more so that the anemia mukt Bharat में जो mandate है, they should be free from anemia fast. अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे का, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और वो बताएंगे कि किस तरीके से रैकेट ने एक कार्यक्रम शुरू किया, एक प्रोग्राम शुरू किया ताकि डायरिया से मौत उत्तर प्रदेश में कम हो। ये डायरिया नेट जीरो प्रोग्राम है। ये जो किट्स आप देख रहे हैं, इनका नाम डायरिया नेट जीरो किट्स है। सबसे पहले इसमें आ जाता है ORS का घोल, जो कि इसमें 2 पैकेट दिया गया है। इसका घोल बनाने का सही तरीका एंड पिलाने का, मतलब बनाने का सेफ रख के पिलाने का सही तरीका हम बच्चे की माँ को बताते हैं कि कैसे बनाना है और घोल कैसे पिलाना है। और सर उसके बाद में ये आ जाएगी जिंक की टैबलेट, जो कि 14 गोली होती है। अगर 2 हफ्ते से 6 हफ्ते का बच्चा, जी बताइए। जी सर, अगर 2 महीने से 6 महीने का बच्चा है तो उसको हम आधी टैबलेट जिंक की माँ के दूध में देंगे, और अगर 6 माह से 5 साल का बच्चा है तो उसको हम 1 टैबलेट देंगे। ठीक है। और बच्चे को कैसे वो पिलाना है वो भी आप बता। यस सर, वो भी हम बताते हैं। ये वो किट है, और सबसे पहली बात तो लोगों को समझाने के लिए
डिब्बे पर रवि काफी मेहनत की हुई दिखती है कि मतलब वो आपको संदेश चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। Again, I believe you've traveled all the way. Where have you come from? From Sikkim. Sikkim. Yeah. I can't wait to hear your performance. Thank you so much. Thank you so much. And it's an honor to perform in front of like Mr. Bachchan sir. Thank you so much. Thank you. I don't care if the whole industry don't know me. I'm just free. I just wanna be myself. Everybody want me to make a hit, kid. I don't fit in this game. I just wanna be myself. Esto parale कसरी अघि बढ्छस् सबै माथि चढ्दै जाँदैछ त तल झर्छस् त भन्दा ढिलो अघि बढ्नेहरू त सँगै पर्नेहरू आज हेर कता छ तिम्रो कुरा सुनि मेरो मन मर्यो यो कलाकारी मलाई धेरै महँगो पर्यो But I just wanna stay strong just hold मंजिल पाके रहेंगे